हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श ददानी दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छे तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो दिस इज एन येट अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन केस स्टडी, एंड कोइंसिडेंटली दिस इज द केस स्टडी नंबर 15 फ्रॉम द ICAI case studies, as well as the case study number 15 from the Samadhan case study book. It was already included in the Samadhan letter. ICAI also came out with that case study. So on that note, there's a very great surprise for you, all of you guys, that one lucky, one fortunate student will get Samadhan case study book for absolutely free. And for that, you just have to comment in this video as Samadhan, and we will choose a lucky student and we will give them a Samadhan case study book for no cost. And on that note, the Sampurna, as you know, the Sampurna, the revision reckoner for IBS, pre-bookings, we have started the pre-bookings of the Sampurna revision reckoner to ascertain the exact amount, or exact should I say, that to ascertain the amount of copies that would be required for you all, because its printing cost is very high due to colors and everything, and we will just recover the printing cost in that book, no additional nothing. So इसीलिए we have started the pre-booking on Sampurna as well. And if you want to buy Samadhan or pre-book the Sampurna, the link is in the description, the website casparshdodani.in. You will get everything there. ठीक है, चलो, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इफ यू वांट टू बी अ लकी विनर, प्लीज कमेंट समाधान इन दिस वीडियो एंड यू मे गेट अ समाधान की स्टडी बुक। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि कौन सी केस स्टडी आज हम कवर करने वाले हैं। द केस स्टडी नंबर 15 इन योर ICAI केस स्टडी एज वेल एज द समाधान। चलो, सी है। अब अभी तक हमने जितनी भी केस स्टडीज कवर की है, अभी तक हमने पहले क्या किया है, फर्स्ट वी हैव रेड द केस स्टडी, देन वी जम्प्ड ऑन टू द क्वेश्चन। इस केस स्टडी, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अप्रोच बदल के देखते हैं। लेट अस फर्स्ट गो टू द क्वेश्चंस, देन वी विल कम बैक टू द केस स्टडी। सर, क्या हर वीडियो में ऐसा, हर केस स्टडी में ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। इट डिपेंड्स ऑन द केस स्टडी एंड व्हाट दे आर आस्किंग। सो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में लगा कि वी कैन यूज दैट अप्रोच, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सारी ऐसी अप्रोच काम में पड़े। एंड एज फार एज द संपूर्ण इज कंसर्न, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से संपूर्ण यूजफुल रहेगी एज अ स्टूडेंट, आप अगर एग्जाम में कोई केस स्टडी को अप्रोच करेंगे। लेट्स बिगिन। So see, let us first jump on to the questions. So the first MCQ question, basic question, with reference to the information given in the table regarding the payments. Okay, this is the question for TDS. Let us first do the theory questions, then we will jump on to the practical questions. Yeah, what can I say? Case study scenario based questions. So yeah, credit of tax paid almost every input and input service used for supply of taxable goods is allowed, except a list of items provided under GST Act. Thus, ITC on such item is not allowed, even though the same may qualify as inputs. So यहाँ basically they are asking what would qualify as input and what would not. So यहाँ they are asking which is admissible, which is admissible. So the first, good stolen, lost, destroyed, written off. This is not admissible, as you know. This comes under the blocked credit. Second, service of general insurance of motor vehicle for transportation of person having capacity of 7 persons. Is there a criteria for that? कुछ number है, याद आ रहा है कुछ? The 13, if you remember, if the motor vehicle is up to 13, then ITC is inadmissible. यहाँ पे कितने? 7. So in this case, ITC is inadmissible. Health services provided to employees working in factory under स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, याद आया कुछ? देखो, बिकॉज IBS जो आपका है वो ग्रुप 2 में है, देयर वुड बी इनकम टैक्स एंड GST, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ही रिलैक्सेशन जरूर रहेगा। देयर वुड बी अ टीनी बिट ऑफ रिलैक्सेशन इन योर इनकम टैक्स एंड GST, बिकॉज आइदर वी आर गोइंग टू give paper of income tax and GST. So yeah, so this is allowed. So we have your answer. Food and beverage, this is disallowed. So the answer is C. Let us we will read that after that only. According to the provisions of Companies Act, a listed company may have one director elected by small shareholders. So here they are asking about the small shareholders directors. ठीक है, सीधा सीधा, whether 400 of the small shareholder Vallabh Cotton Limited are in position to propose appointment. क्यों? Let us check how many are there, because the provision says, what is the provision says? At least 1000 small shareholders or 1/10 in number, not in value. 1/10 in number, whichever is lower, may appoint the
small shareholders director. So as I can see here, company has 500 small shareholders and how many? 400. That's 80%. Can he be appointed as a small shareholder director? Yes, definitely. So the answer is okay. So yeah, just they are asking about what should they do. The notice may be given by 1000 or whichever is lower. Yes, this is the answer. So maybe the elective part may come earlier, that what should they do. He should be appointed or not, that should come later. Okay. Compute the interest of machinery. We will come on to that part. As the management of Vallabh Cotton Limited approached CA Rajesh Dhamecha for seeking advice on appointment of woman director. Which one of the following suggested? ठीक है. That all companies need to appoint women director? No. That every listed company? Definitely. Listed company के ऊपर सब applicable है. सारे directors, every directors are applicable on listed company. Or every other public company having paid up share capital of more than 10 crores or sorry ये एक रहेगा. Listed company, every public company having paid up share capital of rupees 100 crores or turnover of equal to or more than 300 crores. What is the right answer? What do you feel? 10, 100 or 100, 300? Common basic सा है. If you don't know, this is where the Sampurna plays a very important role. See, our main aim is for you guys to get a whole, what can I say, revision of CA final for IBS, as well as to make answer finding very easier for you. See, if you अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन वहां संपूर्ण में आपको सीधा एग्जैक्टली यू विल गेट द पॉइंट. यहाँ पे फिर क्या होगा, इफ सम डिफरेंट क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जाम. देखो एक चीज तो हम पहले समाधान से एक ही ट्राई कर रहे हैं. मैं आपको बोल देता हूं, इट्स वेरी क्लियर कि शायद एक से दो केस स्टडीज आपका सिमिलर या सेम भी बोल सकता हूं, एज इट इज नहीं बोल सकते, पर थोड़ा बहुत सिमिलर या सेम केस स्टडीज आपकी एग्जाम में रहेगी समाधान से. एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ डिटेल्ड इंडेक्स ऑफ समाधान, जहां पे आपको सब चीजें मिल जाएगी, लाइक व्हाट एवरी केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ, व्हाट टॉपिक्स आर दे कवरिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट. ताकि अगर कोई सिमिलर दिख जाए तो यू कैन लुक इनटू द your that index, and then you will find the similar case study in Samadhan. And the Sampurna plays a very important role. Like if you want to know the provision quickly, there's an index in Sampurna, quickly to women director, the scenario, and you have the right answer. So that's a very helpful tool, the Samadhan and Sampurna. Yeah. So the answer is 100 crore and 300 crores. Okay. Then let us jump on to the descriptive questions part as well. Described in the light of provision contained in the Companies Act, whether the proposal to appoint Mr. Brajesh as a SSD can be adopted by the company, and also brief the law relating to appointment of SSD. This is also where the Sampurna comes handy, because सीधा provision we have provided there, and also a quick summary of women director is also present there. ठीक है. और हमने एक ऐसा चार्ट भी वहां पे बनाया है कि कौन से डायरेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन, हाउ दे कैन बी अपॉइंटेड एंड विच कंपनीज नीड टू अपॉइंट देम, और अगर कुछ एडिशनल कंडीशंस है तो दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द संपूर्ण. ठीक है. सो लेट अस गो देयर. सो व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर स्मॉल शेयर डायरेक्टर? दैट द नोटिस कैन बी गिवन बाय 1/10 or 1000, whichever is lower. 1000 तो possible नहीं है because there are only 500 small shareholders. So the criteria would be 1/10. कितना है यहाँ पे? Almost 80%. Almost क्या? Exactly 80%. So that is a great criteria. Great नहीं बोलूंगा मैंने. This is a good criteria for appointment of small shareholder director. ठीक है. We will jump on to the answers. पहले एक बार देख लेते हैं. Just a second. Yeah. SSD, the provision section 151, 1000 small shareholders or 1/10, whichever is lower. The notice shall be signed by all small proposing the appointment of SSD. The person shall not hold SSD in more than 2 companies at the same time. More than 2 companies में आप SSD नहीं रह सकते हो. यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. That is why he can be appointed as a SSD, सब्जेक्ट है कि उनके पास 2 और कंपनी से ज्यादा कहीं पे भी SSD वो होल्ड नहीं कर रहे हो. ठीक है. सिंपल है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आते हैं आपके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे. देखो ये सारे के आंसर अपन ने देख लिए, बेसिक आंसर थे. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन.
With reference to the information given in the table regarding payment on account of job work, TDS and job work, what comes to mind? 194C. आया कुछ चमका? बस. Which one of the following is the correct in respect to the amount of which TDS is required to be deducted? So what is the criteria, if you remember? कुछ याद आ रहा है? So let's first go to the table. So this is the table, this is the payment, 22,015, that is 37,000. Let's calculate it cumulatively. And 37,023, that is your 60, 16 and 25, that is your 85. 85 plus 18, that is your 1 lakh 3,000. Is TDS applicable? So as far as the provision goes, the provision is, it is applicable if a single amount is above rupees 30,000 or rupees 1 lakh in aggregate. 1 lakh in aggregate. So is the TDS applicable on this? Yes. So is TDS applicable on this scenario? Yes. Why? Because the aggregate is above 1 lakh. So the TDS is to be deducted on the whole amount. देखो हाँ एक और बात, TDS कब लगता है? पूरे whole amount पे लगता है, not just on the additional when it cross the additional. The TDS is deducted on the whole amount of rupees 1,03,000. ठीक है, सिंपल है, बेसिक है. चलो उसके बाद yeah, compute the interest on machinery that is allowed as deduction under the Income Tax Act to Agrasen Spinners Private Limited. So what is the interest on machinery that is allowed? So let us jump on to that part. So yeah, this is the part. Agrasen was in business for trading of yarns. Now gradually the company wants to go forward in the area of manufacturing as well. Last year the company had made capital investment in construction of building. This year company purchased the machinery on 1st April 23 for rupees 10 crores. देखो in some earlier Samadhan books there's a tiny bit of error because वो पहले print हो चुकी थी. Sorry. सो यहाँ पे कहीं कहीं पे 21 22 है. सो मेक अ करेक्शन, या फिर रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आंसर्स में नहीं है, जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ एरर इन द ईयर्स टू ट्रांजिशन. बट हाँ, इसको करेक्ट कर लेना. दिस इज 1 अप्रैल 23 और यही एक दो एरर्स, माइन्यूट एरर्स इस केस स्टडी में है. ठीक है, चलो. 1st April 23 को लोन लिया था 12% पर एनम से. द मशीन वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन बट इट वॉज पुट टू यूज इन 1st February 24. मतलब पुट टू यूज कितना है मशीनरी का? ओनली 2 months. ओनली 2 months. तो क्या आपको पूरे साल का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? वुड यू गेट द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर? डेफिनेटली नॉट. व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग पुट टू यूज फॉर 2 months ओनली. तो कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? 2 months का. कितना होता है? कितना है अमाउंट मशीनरी का? 10 crores rupees. Sorry, the amount of loan, sorry, the amount of loan is the amount of loan as we have here 70%. 70% of 10 crores is 7 crore rupees. 7 crore rupees पे आपको कितना मिलेगा? 2 months का मिलेगा. तो 7 CR जो है इस पे 12% of 2 months. So that is only allowed as deduction. कितना है ये? 14 lakhs. You will get the deduction of rupees 14 lakhs only in this scenario. ठीक है, understood why we took only 2 months? Because it was being put to use for only 2 months in that financial year. ठीक है, simple. Yeah, let's move forward. So now this descriptive question. Advise aggressive spinner on the treatment of interest payment made on the loan. Okay, so interest payment made on the loan is like, just a second. Yeah, made on the loan and depreciation allowable for the assessment year 24-25. Assume that the machine is the only machine in the related block of asset. First of all, tell me what is the rate of depreciation in machine? 15%. Okay, 15%. And is there any additional depreciation allowed? Yes. How much? 20%. ठीक है, you know that, you have read that in income tax. नहीं भी तो it will be covered in Sampurna as well as your, because you are obviously going to read the income tax and GST if you are preparing for group 2. Yeah, so let us do the calculation part. So the first thing, tell me what is the allowed interest.
14 लाख. What would we do of the remaining interest? Remaining interest कितना है? टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 7 CR का 12%, दैट इज योर, सॉरी जस्ट अ सेकंड, या 7 CR का 12% कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 84 lakhs. हमने एंड व्हाट इज अलाउड एज डिडक्शन? 14 lakhs. सो द रिमेनिंग 70 lakhs क्या होगा उसका? कुछ तो होगा ना. सो व्हाट वुड वी डू? यस, यू गेस्ड इट राइट. इट वुड बी कैपिटलाइज. क्या करेंगे हम उसको? कैपिटलाइज करेंगे. इट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट. सो व्हाट वुड बी द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ असेट? 10 crores plus 70 lakh, that is your 10 crore 70 lakhs. क्यों? बिकॉज जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है दैट इज कैपिटलाइज. अब यहां से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन. डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? होल या 50%? 50%. Why? Because it is being put to use for less than 6 months, then it is restricted to 50%. So यहाँ पे 20, 23, 24 है, थोड़ा सा बस ये एरर है. ठीक है, no issues. Would be restricted to 50% of the amount calculated as the prescribed percentage as 15%. Therefore depreciation is that is roughly आपका आएगा 80,25,000. But एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है. अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 20%. 20% पूरा मिलेगा क्या? नहीं. कितना मिलेगा? 10% मिलेगा. ठीक है, तो 10% इस आपका ये आएगा यहाँ पे, सॉरी कितना आएगा? 1 crore 7 lakh. So your total depreciation comes out to 1 crore 87 lakh 25,000. बट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ बच गया था वो आपको आगे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. प्रीवियस ईयर 24-25 में आपको वो मिलेगा. ठीक है, समझ गए? इट्स गुड. देखो, केस स्टडीज आर बेसिक. द ओनली डिफिकल्टी इज टू summarize, accumulate everything like from FR to like your audit, SCMP, tax, everything, and that's what makes it a difficult task. And that's why we are here with our classes Samadhan, Sampurna, to help you out and to make IBS as easier as it can be. ठीक है, समझ गए? So let's go to the last question. Yes. Compute the ITC admissible. Okay, so first we have to check out. See, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमको पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज ये केस स्टडी ऐसी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से वापस रिवर्स मैकेनिज्म करके अप्रोच कर सकते हैं. क्या हर जगह पॉसिबल है ये? डेफिनेटली नॉट. इस केस स्टडी में पॉसिबल है. हाँ, ऐसी केस स्टडीज आपको मिल जाए, डेफिनेटली बहुत टाइम बचेगा. यहाँ समझते समझते चल रहे हैं, वहां एग्जाम में अगर यू हैव द संपूर्ण एंड समाधान में भी बहुत ज्यादा टाइम आपका ये बचा देंगे. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे बेसिकली हमको देखना है वेदर आईटीसी इज एडमिसिबल ऑन दीज ट्रांजैक्शंस. सो द फर्स्ट, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस. वी ऑल नो नो आईटीसी इज एडमिसिबल. गुड्स परचेज फ्रॉम बलबीर, फुल पेमेंट मेड बाय आईजीटी लिमिटेड बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड. द पेमेंट हैज बीन मेड बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड. आइदर यू विल यू गेट द आईटीसी ऑन दैट? फिर भी विल लुक ऑन टू दैट. Purchase of good not to be used for business, definitely not. So business purpose के लिए नहीं, you will not get the ITC. Purchase of goods not to be used for business, sorry, ये that is a mistake here. Purchase of goods from Sethi Lal and Sons, invoice of Sethi Lal received in month of February, but the goods were received in the month of March, and we are doing for the February. So the goods are not yet received. Do you will you get the ITC of that? No, because you will get the ITC when the goods are actually received. So you will get the ITC in March, but right now it is inadmissible. Pollution control equipment used in factory capitalized in book. Will you get this? Yes. Electrical motor lorries used for transportation of goods. Transportation of goods के लिए use हो रही. Personal purpose and transportation of goods. Is it allowed? Yes. Electrical transformers used in factory capitalized in book. It is allowed? Yes. Electrical transformer. Pollution control, motor lorries. These three things are allowed under IPC. Capital goods to be used as past purchase from supplier paying tax under कंपोजिशन स्कीम एंड सच कंपोजिशन हैज नॉट बीन कलेक्टेड. क्यों कलेक्ट करेगा? बिकॉज कंपोजिशन डीलर कलेक्ट नहीं कर सकता है. क्या उसमें हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? क्या? डेफिनेटली नॉट. क्यों? बिकॉज वहां पे हमने कोई टैक्स पे ही नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं है.
Molds and dyes used in factories, yes, allowed. हमने देखा है molds and dyes used in factories, the ITC is admissible. The companies buy cement, tiles and avail the services of an architect for construction of office building. Office building के लिए construction के लिए allowed है क्या? Let's look on to that. Yeah. So this is the part. So goods purchased without invoice, nil. Goods purchased not to be used for business, nil. Goods received in February 24, but goods were received in March, so this is also nil. Pollution control, as I told you, it is allowed. Motor lorries for use of transportation of goods, it is allowed. Electrical transformer is allowed. Capital goods under composition, not allowed. Mold and dyes allowed. The companies buy cement, it is not allowed. Why? Because this. Sim. As ITC is blocked on the input or input services related to construction activity like construction of office building, factory building, etc. ITC is restricted, blocked in those cases. That's why it is not allowed. Okay. In Sampurna we have a list of where the ITC is allowed and disallowed. तो वहां पे काफी आपके लिए इजी हो जाएगा. जस्ट जैसे वहां पे क्वेश्चन आएगा अगर कुछ, तुरंत आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं. तो इट वुड बी अ वेरी effective tool as well in this case scenario as well. Yeah. And that good purchase from Balbir, but the tax has not been deposited. So यहाँ पे अलाउड है क्या? नहीं. पहले वो कंडीशन था कि 5% वो करके अलाउ कर दो, वैसा नहीं. अब क्या है? जब तक टैक्स डिपॉजिट नहीं तब तक अलाउड नहीं है. सो व्हाट इज द एलिजिबल आईटीसी इज योर 6,90,000. ठीक है. यू गॉट द जिस्ट. समझ में आ गया किस तरीके से चीजें होंगी पूरी? यू गॉट द पॉइंट. किस तरीके से करना है सब आपको समझ में आ गया. हाउ द केस स्टडीज कैसे रहेंगी, केस स्टडीज किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. सो बेसिकली यहाँ पे आप समझ लीजिए कि केस स्टडीज आर वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल. मतलब ज्यादा उतनी ज्यादा इतना भी नहीं कि आप लोग को डरना है बिल्कुल कि पॉसिबल नहीं है. हाँ, you have to use tools, and that's why we come in here. The books that we have, the Samadhan and Sampurna, are effective tools for you to use in IBS. So सारी चीजें आपको मैंने बता दी है. We have covered everything and this was a easy case study, and I should say कि इस तरीके की case study ही expect करेंगे हम एग्जाम में. So on and let me tell you once again, if you want a free Samadhan book, you just have to comment Samadhan under this video. On that note, bye bye, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम. बहुत अच्छे से पढ़िए, आग लगा दीजिए.